स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल TSMG लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में लेसन नंबर 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस पार्ट 1 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों लेसन की शुरुआत कहाँ पर होती है दोस्तों, और कहाँ तक ये लेसन हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारी जानकारी जो है हम आपको धीरे एक एक करके बताते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों इस लेसन के ऊपर। अब लेसन नंबर 2 जो कि साइंस पार्ट का लेसन नंबर 2 है हमारा, तो लेसन का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले दोस्तों, तो कंटेंट हमारा सबसे पहले एलिमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन, दूसरा पॉइंट है डोबेराइनर ट्रेड, तीसरा पॉइंट है न्यूलैंड ऑक्टेव्स, चौथा पॉइंट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और पांचवा पॉइंट है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये सारी चीजें हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट से। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाई वी क्लासिफाई एनीथिंग, बिकॉज टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज वेरी इजीली वी क्लासिफाई एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ग्रुप, any state or any something you can say which we classify. To know the property and different aspect related to that thing, we classify them according to their properties and according to their features. So classification of element is also important because as we know in the time 18th century there were not more discoveries of element. Where till that time we only know around 30-40 elements which were not completely known to the scientists. So who started the classification? First of all, a scientist named as Lewis started classification. He termed the elements in two parts, metal and non-metal. Metal and non-metal, he classified the elements into metal and non-metal. Then I have also written metalloids. After some time, as the research goes on, many discoveries have been done that time, and some of the metal and non-metal were seen, and some of the elements are also seen which have both the properties of metal and non-metal. So later on metalloid was also considered as the property as the in the classification of elements. So friends, you come to know why classification is necessary. So coming to the next point, today we know 180 elements. As you all know, आज के समय में हम 180 एलिमेंट जानते हैं, लेकिन 18th सेंचुरी में इतने एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे, नॉलेज कम थी, उतने डिस्कवरीज के चांसेस कम थे। As the knowledge about the element and the property went on increasing, different scientists started trying out different classification. फ्रेंड्स जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, क्लासिफिकेशन का जो मोड है, जो मेथड है, जो टर्मिनोलॉजीज है, जो एस्पेक्ट है, या जो अलग अलग चीजों के मद्देनजर उनको क्लासिफाई किया गया, वो भी बढ़ते गया। और बहुत सारी थियरी क्लासिफिकेशन क्या है, उनमें से कुछ थियरी एक्सेप्ट हुई जो वर्ल्ड वाइडली जानी गई, और कुछ थियरी ऐसी हुई कि जिनको वर्ल्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों कुछ ऐसी थियरीज के ऊपर हम इस लेसन में जाने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल come to know about the Dobereiner's traits. Dobereiner, he was a professor in that time and a good professor. Dobereiner trait. What is Dobereiner? Dobereiner was a scientist in 18th century and he gave the terminology of trait. You can also relate, sometimes we relate trait, there are this difference in spelling. Then what is traits? What is Dobereiner traits? We will come to know about this. What have Dobereiner suggested to the world about the classification of element? Property of element are related to their atomic masses. Friends, सबसे पहले उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी जो है वो उनके एटॉमिक मासेस के ऊपर डिपेंड करती है। किसके? एलिमेंट के। अब एक एलिमेंट में एटॉमिक मास कैसे होगा, तो उसमें आप जानते होंगे कि एक एलिमेंट की जब रचना होती है तो उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसी कई सारी चीजें थी जो उस समय निर्धारित नहीं हो पाई थी, जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई, जिनकी डिस्कवरी बाद में हुई। उस टाइम पर यहाँ पर डोबेराइनर ने अपना जो थियरी पुट किया था उसमें उन्होंने बताया था कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मासेस से रिलेटेड करती है।
उन्होंने क्या किया, ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड कॉल देम ट्रेड्स। उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिसमें 3 एलिमेंट को उन्होंने पुट किया और उन्होंने बोला कि तीनों एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम है और उसको उन्होंने नाम दिया ट्रेड। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ही अरेंज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। उनका जो अरेंजमेंट था वो एटॉमिक मास के अनुसार था। अब एटॉमिक मास की थियरी उन्होंने कैसे रखी, उन्होंने क्या कहा, तो जरा देखते हैं उनको। ही सेड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि उन्होंने 3 एलिमेंट रखे, 3 एलिमेंट में उन्होंने कहा कि जो मिडल एलिमेंट, मिडल वन जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन दिस मिडल वन इज sodium. What is the atomic mass of sodium? It is 23. Then atomic mass of sodium is 23. Then what have Dobereiner told us? Dobereiner told us that the atomic mass of the middle element means Na, sodium, is equal to the mean of the atomic masses of other 2 elements. में मतलब mean A प्लस सी, ए फॉर यहां पर आपके ए के स्थान पर लिथियम और यहां पर पोटेशियम। तो लिथियम और पोटेशियम का जो मीन होगा दोनों का ऐड करेंगे हम, सम, वी विल डू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम एंड वी विल ऐड एंड डिवाइड बाय 2, वी विल टेक आउट द मीन। सो व्हाट हैव Dobereiner said? Dobereiner said that the atomic mass of the middle element is equal to the mean of the atomic masses of other 2 elements. So here is an example of this. But friends, after some time the limitations came and the Dobereiner theory was totally flopped, because after some time this trade does not apply on the different element. That is why Dobereiner theory was not widely accepted for the classification of the element. Later on, after the failure of Dobereiner's theory, a new law was proposed by Newland. Another scientist who have proposed it in the classification of element was Newland. He put the law of octave. Octa, it means 8, friends. So what is the reason of octave? Why octave was named to this law? So we will come to know what he has done. He has arranged the element known at that time in an increasing order of their atomic masses. Same friends, according to the Dobereiner, he has also arranged the element according to their atomic masses, and same has been done by the Newland. He also arranged the element according to their atomic masses. He found, what he have found, that every 8 element had the properties similar to those of the first. Octet means 8. So what has Newland said? That first element is as same as to the 8 element. Means 8 element have the property same to the first element in a series. So it is like the musical, like sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. Again the. Then it is same like the musical tone. So Newland octet put the theory of octet. For example, sodium is the 8th element from the lithium. He made a series, and in that series lithium was the first and sodium was the 8th. Both have the similar property. Their property were similar. But friends, the theory have some limitation. What limitation Newland had? The limitation was Newland could arrange 56 element only up to calcium. He only arranged 56 element till calcium. There were many other elements which were discovered and not arranged after calcium. Second limitation, Newland placed the metal CO and Ni under the note do along with halogen, while Fe having the similarity with CO and Ni away from them along with the non-metal OS and under the note Ti. In this we will understand what he have done here. Done according to the similarity in the properties, he arranged it in a series. So in the series where he arranges copper and nickel in to the consideration of halogen, so difference in their property,
and same he has done with oxygen and sulfur also. So this is the second Newland limitation. Which third one is the property of new elements discovered later did not fit in the Newland's law of octave. And the third limitation of Newland was that after some time more elements were discovered, but that element do not fit in the theory of the Newland. So Newland's theory was completely rejected after some time with other inventions. So friends, till here you have understand about two theory of Dobereiner and Newlands. So friends, what is the next theory we will learn, and we will come to know about more theories in this lesson ahead. The next theory will be the Mendeleev periodic table. So what is the theory of Mendeleev and what is the periodic table of Mendeleev? We will come to know. So friends, we will move ahead. And we will learn about the Mendeleev periodic table. So friends, coming to our next topic, Mendeleev's periodic table. So friends, after the discovery of Dobereiner's and Newland, a new theory was proposed and it was accepted for a wide time, and the theory was given by Mendeleev. Mendeleev placed a periodic table in which he was little bit successful to put all the element discovered till that time. So friends, next we will learn about the Mendeleev periodic table, the merits and demerits of Mendeleev periodic table. What was good and what was not good in the Mendeleev periodic table. So friends, we will start with Mendeleev periodic table. We will learn one by one what he has done. So friends, I will explain you in both English and Hindi. I will start here from this side. He also considered atomic mass as a standard property. As per Dobereiner and Newland, Mendeleev also considered as the atomic mass is the main property of an element. He arranged 63 elements known at that time in an increasing order of atomic masses. So friends, it is very important line. He arranged 63 elements known at that time in an increasing of their atomic masses. He also arranged in increasing order of their atomic masses, and he completely arranged 63 elements which were discovered and known till that time. So ये एक मेंडलीव की बहुत बड़ी खासियत हुई जो जिनकी वजह से उनको बहुत ज्यादा रिस्पांस आया जो है, क्योंकि वहां जितने भी एलिमेंट थे 63 के 63 सभी एलिमेंट्स को उन्होंने सक्सेसफुली अरेंज कर दिया. थर्ड पॉइंट पर चलते, ही कंसीडर बोथ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स. मेंडलीव की ये भी खास बात थी, ही कंसीडर बोथ द प्रॉपर्टी फिजिकल एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट. पॉइंट नंबर नेक्स्ट, he found repetition in the property of a definite interval. When he considered both physical and the chemical property of the element, he found a repetition in the property of the elements after a regular interval of a time. After a definite interval of a time, he found that the property of the element are the same. He proposed a law of periodic table. What was the law by the Mendeleev law for the periodic table? We will learn about that. The element with the physical and the chemical property are periodic function to their atomic masses. He successfully explained that the element with physical and the chemical property, both the physical and the chemical property of the element is periodic in function to their atomic masses. So he considered atomic masses as the main strength in the classification of the elements. He made a table like this. In this form, he put vertical columns, and in the periodic table are called as groups, and horizontal rows are called as the period. He put group and period in his table and put the elements like this. You can see hydrogen, lithium. In this process, he made the table and put the elements according to that. So friends, we will come to know about the merits of Mendeleev periodic table. What are the merits of Mendeleev periodic table? So friends, atomic masses of some element were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their property. Friends, Mendeleev stated that
Mendeleev has done a research on the atomic masses and he revised some of the properties based on chemical and physical property, and he told in accordance to their property he put beryllium in right place before the boron by changing the atomic mass from 14.09 to 9.4. This was the merit of Mendeleev periodic table. Next merit of Mendeleev periodic table, he kept vacant place in the periodic table for the element not discovered till then. Very important point. उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स के लिए जगह पहले से बना के रख दी थी जो डिस्कवर ही नहीं हुए थे, लेकिन उनकी खासियत के एग्जांपल के तौर पर ई का बोरॉन, ई का एल्युमिनियम एंड ई का सिलिकॉन. साथ ही साथ he also predicted a property of the element which later on matched as same. उन्होंने साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी भी बता दी थी कि कैसे उनकी प्रॉपर्टी होगी, जो कि बाद में जब डिस्कवरी हुई उन एलिमेंट्स की एज टू एज सेम जो इन्होंने बताया था वो सेम उसकी भी प्रॉपर्टी. तो इसकी वजह से मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो और ज्यादा एक्सेप्टेड हुआ. Mendeleev created zero group without disturbing the original periodic table in which noble gases were fitted very well. So friends, इसमें Mendeleev periodic table में जो नोबल गैस को उन्होंने एक अलग से ग्रुप दे दिया, क्योंकि उस टाइम नोबल गैस कंप्लीटली डिस्कवर्ड नहीं थी. पर नोबल गैस जब बाद में डिस्कवर्ड हुई तो उन्होंने इजिली वो नोबल गैस का पूरा एक अलग से ग्रुप उठाया और अपने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने पेस्ट कर दिया. तो ये भी उसका मेंडलीव का जो है एक खासियत हुआ. तो ये कुछ ऐसे मेरिट्स है जिसकी वजह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को एक ब्रह्मास्त्र की तरह देखा गया पीरियोडिक टेबल के क्षेत्र में. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रेंड्स. अब अगली पॉइंट है कि आखिर जब इतना सक्सेसफुल रहा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल तो ऐसा क्या हुआ कि इसमें कुछ कमियां आ गई. फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम गलतियों से सीखते हैं. कुछ गलतियां डोबेराइनर ने की, उससे सीखकर न्यूलैंड ने अपनी थियरी दी जो है, उससे न्यूलैंड की कुछ गलतियां हुई, न्यूलैंड से सीखकर जो है हमारे मेंडलीव ने जो है थियरी पुट की. अब बहुत सारे साइंटिस्ट एट द सेम टाइम डिस्कवरीज चालू रखते हैं, तो इसी पीरियड में बहुत सारी डिस्कवरी होते गई, तो कुछ ना कुछ डिफॉल्ट सीरीज में जो है निकलता गया. अब थियरी में इनके क्या जो इन्होंने पुट किया पीरियोडिक टेबल का थियरी, उसमें डिफेक्ट क्या आ गया, मतलब डीमेरिट्स क्या हो गए, वो हम देखते हैं वन बाय वन. The whole number of atomic mass of element cobalt and nickel is the same. जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि मेंडलीव का पूरा पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने सेट किया था, पर उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सेट किया था. तो जब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सेट किया तो कहीं एक गड़बड़ी हुई जहां पर कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास जो है सेम आया. तो इससे क्या हो गई, उनका जो एसएमसीडी था वो रॉन्ग हो गया. अब इनको जगह कहां पर दे, दोनों को एक साथ रखेंगे तो कैसे रखेंगे, दोनों को एक जगह पर तो रख नहीं सकते एक ही ग्रुप या एक ही कॉलम में. तो यहां पर जो है कोबाल्ट और निकल के केस में उनका डीमेरिट हो गया, वो बराबर उनको प्लेस दे नहीं पाए. सेकंड पॉइंट, आइसोटोप वेयर नॉट प्लेस्ड इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. आइसोटोप्स फ्रेंड्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये ऐसे प्रॉपर्टीज होती है जिसमें कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और एटॉमिक मासेस डिफरेंस होते हैं. तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो, ऐसे कुछ एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए, उस टाइम तक डिस्कवर हुए नहीं थे और उनकी जगह मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नहीं थी. ये उनकी एक और डीमेरिट हो गई. अब नेक्स्ट डीमेरिट है द राइज इन द एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म. इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट एलिमेंट इन बिटवीन देम. फ्रेंड्स, हुआ क्या, जब उन्होंने अरेंज किया एटॉमिक मास पे तो कुछ के एटॉमिक मास 24 थे, तो कुछ के एटॉमिक मास 28 हो गए, कुछ के एटॉमिक मास 42 हो गए. ऐसे करके क्या हुआ, एक हैवी डिफरेंस आया एटॉमिक मास के बीच में. तो इससे ये समझ में आया कि अगर इन फर्दर कोई हैवी एलिमेंट डिस्कवर हो जाता है तो उनको हम कहां प्लेस देंगे या उनकी जगह कहां पर रहेगी. तो इसकी वजह से ये जो एटॉमिक मासेस का जो डिफरेंस आया, जो कि बड़ा डिफरेंस था, इसके वजह से भी इनके डीमेरिट्स बन गए. और लास्ट है दोस्तों हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में. जैसा कि आप देख सकते हो उन्होंने यहाँ पर एक जगह तो दी है, पर हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी थी वो दो तरीके से मिलती जुलती थी. एक अल्कली मेटल से भी मिलती थी और एक हाइड्रोजन ग्रुप से भी मिलती थी. तो हाइड्रोजन को क्या जगह दी जाए उनके पीरियोडिक टेबल में ये फिक्स नहीं हुई. तो ये कुछ डीमेरिट्स, मेरिट और उनकी थियरी है. तो फ्रेंड्स, यहां से हम समझ गए होंगे कि मेंडलीव ने काफी अच्छी थियरी पुट की थी. दोस्तों, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 इस लेसन का समाप्त होता है.
अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हेनरी मोसले ने रखा था 1930 में। इसके मेरिट्स क्या है, कैसे इसको बनाया गया, किस थियरी पर ये बेस्ड था, इसका लॉ क्या था, इसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों पार्ट 2 पढ़ने से पहले हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल TSMG लर्निंग पॉइंट।